Welcome everyone to today's session. It is being organized by Pak Launch, which is a global community of over 60,000 Pakistanis who want to give back to Pakistan. Members include distinguished investors, entrepreneurs, professionals, academics, and the Pak Launch community has helped over 50 startups raise over $10 million in 2021 alone. With us today, we have Naveed Sherwani, Dr. Naveed Sherwani, who is a well-known semiconductor industry veteran with over 30 years of experience in entrepreneurial, engineering, and management spaces. He is widely recognized as an innovator and leader in the field of design automation of microprocessors and semiconductor spaces. Naveed Saab has founded and co-founded over 11 Silicon Valley companies and raised over $1 billion in 15 funding rounds from VCs over the course of his career. And for his service to Pakistan, Dr. Naveed Sherwani was awarded Sitara-e-Quaid E Azam in 2019 by President Arif Alvi. Is that all correct, sir? Thank you so much. Yes, I think most of it is correct. Thank you so much for joining. I start the conversation just sort of trying to understand your own experience. You've been in the industry for quite a while. मुझे थोड़ा सा अगर आप एक short summary सी दे दें, run through कर दें कि what your experience have been in the past couple of decades, what you've been up to in the space. Sure. I graduated from NAD University in Karachi. Was 1982. Then I went on to do my PhD in the United States. After that, I was a professor for approximately 10 years. And after being professor for 10 years, I worked in a large company called Intel. It's mostly known for microprocessors. I worked there for 10 years. And then for the last 20 years, I spun out a company out of Intel called Intel Microelectronics. That was kind of the first big deal I did, where I raised $45 million. I sold the company for $252 million 3 years later. And subsequently, I have created approximately 18 companies now, all in the area of semiconductors related fields and around the world, some in Korea, some in China, some in US. So all of them are related to chip design. That's what I've been doing for the last 40 years. That's very interesting because now that हमने ये plan देखा, it's been going around जो national semiconductor plan है, and you're really sort of going big in Pakistan, right? Like you want के वो जो revolution है that you've been part of in the last couple of decades, वो Pakistan में भी आए. I'm trying to understand, why do you think it's so important for Pakistan? Because you're well settled, you have a rich experience with you. Generally Pakistan के बारे में सोचने से दिमाग में आता है कि यार खप होगी, ख्वारी होगी. I have this great thing going. Why should I be doing this right now? Why do you think it's so important for Pakistan to have a semiconductor plan to begin with, and then eventually an industry? तो इसको हम सवाल को रिवर्स भी कर सकते हैं. हम ये भी पूछ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जाया जाए, राइट? पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव छोड़ देते हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में 1 मिलियन बंदों की जरूरत है सेमीकंडक्टर बिजनेस को. वो बंदे कहाँ से आएंगे? चाइना को जरूरत है, हमें यूएस के अंदर हमारी कंपनियां हायर नहीं कर सकती, इंडिया में हम हायर नहीं कर सकते, तो कहाँ से हायर करेंगे? वियतनाम इज ओवररन, मलेशिया इज ओवररन, ताइवान में कोई बंदे हायर नहीं हो सकते. राइट नाउ पाकिस्तान और एनी अदर country which has good trained manpower, I think another one would be Bangladesh, who can quickly train up their people in this field, can deploy 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh लोगों को लगा सकते हैं इस फील्ड में. And for inspiration, you can see India. हमारे एक बार ऐसे desperation एक बार पहले भी आ चुकी है, वो 1997 की बात है. Internet boom was fueling all the chip startups, and we needed hundreds and thousands of people. I came to Pakistan. I asked people around here. I went to China, many places, and I went to India as well. India में people were ready, and we started a few companies. I started mine, Intel Microelectronics, in 1997. Today, 22 years later, India is exporting $16 billion worth of semiconductor-related services today. But they got on the bandwagon in that time. Now, in this time, situation is because of the trade war between US and China. Every chip जो पहला एक बना करता था, वो 5 चिप्स बनेंगे. इसलिए कि अब पहले अमेरिका में चिप बनता था, वो हम चाइना में बेच लिया करते थे. अब अमेरिका कहता है बेचना नहीं है, चाइना में चिप बनेगा. यूरोप is creating their own standard. Japan has its own standard. So various different standards की वजह से एक ही चिप 5 दफा बनेगा.
that means you need 5 times the headcount that you had before. So suddenly, this has created a lot of people. So where will these chips be made? Where will they be designed? This is the opportunity for Pakistan and for other countries. अब दुनिया पाकिस्तान का इंतजार नहीं करेगी. अगर पाकिस्तान इस बैंड वैगन पे, दुनिया तो चलती रहती है. बांग्लादेश कर लेगा और लोग कर लेंगे, इंडिया अपने लोगों को एक्सपेंड कर लेगा, थाईलैंड जंप इन कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है. So this, I think, is an opportunity for Pakistan to not miss this chance. At least get 100,000 people involved, make a lot of money. My estimate says if 100,000 people can be involved over the next 4, 5, 6 years, we can make around $4 billion of foreign exchange coming into Pakistan by doing just that. Every year. Every year. Interesting. And just to sort of understand, जब आपने कहा कि 100,000 लोग जो हैं वो इसमें involved होंगे, what are we talking about? Are we talking about I mean, I'm trying to wrap my head around कि क्या services का काम है या ये production का काम है कि factory के अंदर potentially लोग जो हैं वो semiconductor production में वो होंगे. What's the vision here? You know, what sort of talent are you looking at creating in Pakistan? We are just talking about design right now. ये जो 1 million jobs हैं, ये mostly design jobs हैं. Design job क्या होती है semiconductor में? Chip जो होता है, the way it gets designed is that it goes through many phases. उसमें तकरीबन 16 phases होते हैं from a concept of what the chip has to be in a system. Then we say, okay, what is an architectural design? Then उसके हर piece को design किया जाता है, फिर उनके interfaces को design किया जाता है, फिर उनको physically design किया जाता है कि silicon पे वो कैसे लगेंगे, फिर उनको verify किया जाता है, फिर उसको factory भेजा जाता है. ये जो 14-15 स्टेप होते हैं, ये सब कंप्यूटर टूल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स कहते हैं. ये एक किसी भी बंदे को ट्रेन किया जाता है कि तुमने ये स्टेप करना है, मतलब लेआउट है या वेरिफिकेशन, कोई भी एक स्टेप है. अब देखिए ना, आप गाड़ी भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले एक आर्किटेक्ट आपको एक गाड़ी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट देगा कि भाई गाड़ी की स्पीड ये होगी, शेप ऐसी होगी. फिर कोई बंदा उसका पैनल डिजाइन करेगा. वो कैसे करेगा? वो कैड कैम सिस्टम पे बैठ के पैनल डिजाइन करेगा. फिर कोई इंजन डिजाइन करेगा, कोई टायर डिजाइन करेगा. वो फिर आपस में इनको जोड़ के टेस्ट करेंगे, काम करते हैं कि सही. फिर गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग पे जाएगी. तो ये जो बात है ना कि फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कार टू द फुल डिजाइन ऑफ द कार, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अ चिप, एक्सेप्ट प्रॉब्ली चिप इज more complicated than a car because chip has billions of more components in it, but still it's the same process. And it is done in design houses where people sitting in front of screens using servers and laptops do that. This can now be done anywhere in the world. If you have a person sitting in Pakistan who's trained, who can do it. Right. Do you think जो आपके electrical या mechatronics engineers होते हैं, do you think they can be upskilled for this? Because I mean, the reason why I ask is Pakistan में some of the smartest kids for the longest time used to go to either electrical, mechanical or mechatronic engineering. And unfortunately, एक vacuum ऐसा exist करता है कि इन तीनों courses की jobs ही नहीं है. And which is why some of the biggest, again, the smartest talent, वो 4 साल अपने ज़ाया करता है essentially because वो उसको use नहीं कर रहा होता और फिर आखिर में, you know, they do like a content writing course, freelancing कर रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं. Do you think this semiconductor का काम है, इसमें upskill किया जा सकता है उस talent को to be able to work on this? ना सिर्फ upskill किया जा सकता है, हम ये experiment already कर चुके हैं. हमने आज से 2.5 साल पहले एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला था लाहौर में. हमने 3,000 बच्चों को इन्हीं 3 फील्ड से टेस्ट किया था. हमने ये मालूम किया था कि उनकी स्किल गैप क्या है. हमने ये भी मालूम किया था कि उसको स्किल गैप को कवर करने का तरीका क्या है. उनमें से तकरीबन इवेंचुअली 200 बच्चे ट्रेन हुए और इस तक वो पाकिस्तान के अंदर 4-5 कंपनियों में काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में 4-5 सक्सेसफुल सेमीकंडक्टर कंपनियां अब काम कर रही हैं उस एक्सपेरिमेंट की वजह से. अब सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है उसको अब बड़े नेशनल स्केल पे किया जाए एंड वी कैन यूज द डाटा फ्रॉम दैट. तो अब जो हमारा ख्याल है, इट विल टेक अबाउट 10 months टू एक्चुअली ट्रेन. पहले 3 महीने में हम ये करते हैं, हम गैप्स आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने कि इन बच्चों की नॉलेज में गैप्स क्या है. नेक्स्ट 3 मंथ में हमको एक पूरा चिप के लाइफ साइकिल से लेके जाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑल द वे टू डिजाइनिंग अ चिप दैट गोज एक्चुअली फॉर फैक्ट्री में. तो हर बच्चे से हम कहेंगे कि आप डिजाइन करें और वो हम चिप एक्चुअली फैक्ट्री में भेजेंगे डिजाइन के लिए. 3 महीने लगते हैं चिप को बनने में. उस 3 महीने में हम उनको एक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, और आखिरी 1 महीने में वो चिप वापस आ जाएगा जिसको वो डिबग करके मालूम करेंगे कि चिप काम कर रहा है कि नहीं.
लेकिन हमारी सारी ट्रेनिंग जो होगी वो एक खास जॉब के अगेंस्ट होगी। तो हमारा आइडिया ये नहीं है कि हम लोगों को ट्रेन करें और कोई जॉब ना, हम पहले ही शर्त लगा रहे हैं कि हम कंपनियों में जॉब ढूंढेंगे, कंपनियों से एग्रीमेंट साइन करेंगे कि भाई आपको 100 बच्चा चाहिए इस जॉब के लिए, फिर हम उस बच्चे को उस जॉब के लिए ट्रेन करेंगे, ताकि जब बच्चा जॉब कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट करे गारंटीड जॉब होनी चाहिए, वरना हम किसी बच्चे का कोई टाइम जाया नहीं करने फॉर। So this is exactly how we want to do. We want to bring design companies here and then get a job description for and promise the job company कि हम आपको एक बंदा ट्रेन करके देंगे, आपको पहले दिन जब बच्चा वहां पहुंचेगा वो काम करेगा प्रोडक्टिवली, उसमें हार्ड स्किल्स भी होंगी, सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी। तो इसीलिए हमने एक 10 मंथ का प्रोग्राम बनाया है which is part of Pakistan National Semiconductor Plan. Right. Mention the Pakistan National Semiconductor Plan and just jump right into it, right? What exactly is the plan? जिन लोगों ने document देखी है, it's a very detailed document. जाहिर है कि उसमें वो सारा सारा आपने उसमें उसको किया है, but if you can sort of break it down for us, कि what's the thought behind the plan and क्या आप उसको essentially करना क्या चाह रहे हैं? What are you proposing? So हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो दुनिया में 1 मिलियन लोगों की जरूरत है, उसमें से किसी तरह से 1 लाख लोग पाकिस्तानी हो जाए, ठीक है? तो हम वो समझते हैं कि उनके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में ट्रेन होंगे और पाकिस्तान में काम करेंगे, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान में ट्रेन होंगे लेकिन कहीं और जाके काम करेंगे। जो इस वक्त बहुत लाइकली जगह जब वो जहाँ के जाके काम करेंगे वो है चाइना। चाइना की प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अमेरिका से उनको लगता है कि उनके सारे चिप बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके ऊपर वो तकरीबन हुकूमत $300 बिलियन लगा रही है और प्राइवेट लोग उतने ही लगा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 400 से $600 बिलियन लग रहे हैं चाइना में। कंपेयर टू चाइना पाकिस्तान के साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहा है, उसके अंदर टोटल ओवर 4 years is $60 बिलियन। नाउ इमेजिन $60 बिलियन कंपेयर टू 400 to 600 बिलियन जो चाइना इस वक्त खर्च कर रहा है अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रॉप अप करने के लिए। तो उस वक्त उनको 5 लाख लोगों की जरूरत है। वो लोग किसी तरह से भी अगले 4-5 साल में 5 लाख पैदा नहीं कर सकते कहीं से, इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल, इसलिए कि वहाँ पे और फील्ड्स भी हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लड़के लड़कियां वहां भी चले जाते हैं। तो एक हमारा ये है कि तकरीबन ये जो 1 लाख लोग हैं उनमें से फर्ज करो 20,000 पाकिस्तान में काम उनको मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में 40 कंपनियां स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर वो 20,000 लोग जाएंगे। बाकी 80,000 लोग हम अगर चाइना के साथ एक अच्छा एग्रीमेंट कर लें कि हम यहाँ के लोगों को ट्रेन करके उनकी जॉब स्पेसिफिकेशन विल कम फ्रॉम चाइना, बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्रेन देम, एंड देन अगर हम लोग इनके वीजे आसान कर दें तो those people can go work in China for 4, 5, 6 years, whatever. Many of them will potentially come back, and then they will. So this is the plan. Okay, how do we get 2 things done? Incentivize करने के लिए कहाँ से आएंगी कंपनियां? या तो चाइना से आएंगी या अमेरिका से आएंगी। ज्यादातर हमारा ख्याल है अमेरिका से आएंगी, इसलिए कि अमेरिका में बिल्कुल ही लोग अवेलेबल नहीं है डिजाइन करने के इस वक्त। तो हम लोगों ने बात की अमेरिकन कंपनी से बहुत सारी, अल्लाह का शुक्र है वी हैव कॉन्टैक्ट्स विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। तो उन्होंने कहा भी हमें यहाँ ट्रेंड हेडकाउंट चाहिए, थोड़े इंसेंटिव्स दें, ये करें वो करें। तो हमने नेशनल सेमीकंडक्टर प्लान में वो इंसेंटिव्स का पैकेज डाल दिया। बहुत अच्छी बात यह है कि आवर करंट गवर्नमेंट has worked very hard with us. Many departments, many parts of the government have worked with us for the last 1 year or so to actually put together an incentive plan, which is a very attractive incentive plan, that when those American and Chinese companies come here, it would be comparable to what other nations around the world are offering. On the second side, we are in negotiation with China कि हमारे वीजे स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जाए, सो दैट जब पाकिस्तान के लोगों को वो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिल जाती है, बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग they can go and work in China and not have to provide any other credentials other than that training. तो अब ये दोनों अगर avenues खुल जाते हैं तो इंशाल्लाह in 3-4 years, 5 years, we can have 100,000 people working, and that's our primary goal. Secondary goal is to slowly bring manufacturing to Pakistan as well. Manufacturing in semiconductor is very intensive. It is capital intensive.
वो पाकिस्तान के पास वो कैपिटल नहीं है, तो हमारे पास छोटा कैपिटल है, वी कैन इन्वेस्ट 50, 60, $100 million काइंड ऑफ। उससे चिप की जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वेफर की, जिसमें मेन चिप बनता है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जब चिप को पैकेज किया जाता है, छोटे छोटे उसमें प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, वो प्लांट तकरीबन 50 से $100 million का लगता है। तो हमारे प्लान में ये लिखा गया है कि व्हाई डोंट वी इंस्टॉल दैट, पुट दैट इन एंड लेट्स स्टार्ट देयर। तो एक we have suggested that. Of course, mind you, this is not a plan. We are not asking government to invest. This is a plan for Pakistan to do semiconductor. Most of it will be done by private folks, either in US or China or Pakistan. Government component of this is strengthening universities. This is their universities, they are government universities, and supporting infrastructure, providing incentives for people to come in. Land हो गया, better rent rates हो गए, taxation incentives हो गए, customs incentives हो गए. Those are the kind of things. But we are not really asking government for a handout. This is not the plan. The idea really is government helps, private sector uses that help to bring business into Pakistan and establishes that. Right. You've been meeting the government, particularly this government की जब आप plan कर भी रहे थे उससे पहले से भी, and I think अभी भी आपकी meeting कुछ आने वाले दिनों में हो रही हैं. थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि, और हमने बल्कि as a matter of fact recently Prime Minister का visit हुआ था to China, and we heard a little bit about some sort of a MOU with I believe global semiconductor group. चौधरी साहब ने उसके ऊपर tweet भी किया हुआ था. Government इसको किस तरह से देख रही है? Because again, for most people sitting in the private sector, they would have thought कि government को तो समझ भी नहीं आएगी the importance of something like this. But clearly they're talking to you. There's a money का component नहीं है, but there definitely और किस्म की requirements हैं जो कि plan में भी listed हैं. So what's your experience been with the government so far, and do you have the buy-in from their side? So, सबसे पहले तो, I think the government has understood, I think. And when I say government, I mean our president, I mean our prime minister, I mean folks which हमारे जो minister हैं science and technology के शिवरीत फराज साहब, हमारे IT के minister हैं, CPAC खालिद मंसूर साहब रन करते हैं, STZA आमिर हाशमी साहब रन करते हैं, and then मोहित यूसुफ साहब जो हमारे national security advisor हैं. All of these people have understood one thing, which I think is very, very important, that issue of semiconductor is not just an economic issue of participating in a $1 trillion economy and bringing jobs to Pakistan. It is also issue of sovereignty of Pakistan, because no nation is going to give you chips. If you cannot make your own chips, eventually you are beholden to some other country who will provide you those chips. Now, why is the chips so important? Problem ये है chips के साथ कि literally nothing works without chips. In particular, आप देख लें, आपका banking sector हो गया, आपका education sector हो गया, mobile infrastructure हो गया, आपका defense हो गया, आपकी energy sector हो गया. कौन सा sector ऐसा है जिसके अंदर if somebody tomorrow says कि हम पाकिस्तान में कोई chip नहीं आ सकता? It happened to China. China has been threatened, and that's why China is investing $600 billion, which is one of the largest amount of money any nation has ever spent on any project in the history of mankind, because they feel an existential threat. It happened to Turkey. Right now, I think Russia is under threat, exactly the threat. Okay, if you don't play according to what we are saying, you may not get those chips and we may block you. So I think what the Pakistan government has understood, which I think is very important, and I was very pleased to see that they got this message so quickly. It is an issue of sovereignty of Pakistan. Now, Pakistan is not the only nation which understood. India understands that. India announced a plan of $11 billion, which has now ballooned to about $30 billion. Other nations are also doing the same thing. So I think the first thing which is very welcome is the Pakistan government understands. Second, I think they also understand that Pakistan employment is a very big issue. How do you get employment? The third thing is we have a beneficial situation with respect to China. We have a great standing situation. Mostly China is doing things for Pakistan. This is a great opportunity where Pakistan can do something for China.
तो अगर आप सॉवरेंटी इशू को देखें, इकोनॉमिक इश्यूज को देखें, our relationship with China को देखें, I think all these vectors you will come to the conclusion this is a great opportunity. I think our present government has understood it. They are working earnestly. I'm very pleased how at the speed they are moving. You know, you have to understand government by definition is slow, not just in Pakistan, everywhere else. There are many, many wheels to grease. It's a complicated equation, many people, but every door that we have knocked on, the answer has been yes. And the answer has been, okay, tell us what to do. And it has been, they have been extremely helpful. I know it will take time anyway, but so far, so good. Right. And इसी के साथ what I like to understand is कि जाहिर है कि this is something जो कि is advanced for most of the world, right? Most of the chips are right now being produced in a handful of countries all over the world. जब हम बात करते हैं कि एक नई इंडस्ट्री के अंदर हमने डेवलप करना है उस इंडस्ट्री को, हमने टैलेंट बिल्ड करना है, हमने जाहिर है उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी है. Why do you think semiconductor is one जो कि I mean or rather इस question को मैं इस तरह से करूंगा, a lot of people would say कि यार maybe semiconductor should not be our priority right now. There are so many other areas जो कि easier to get into हैं, low hanging fruits हैं, maybe those are the ones that we should be looking at. Why do you think semiconductor is more of an existential thing for us? If you can focus more on the जो आपने sovereignty वाली बात बोली ना, उसमें अगर national security का element आता है, तो what would that be essentially? So, I mean, I think some things like let's assume okay, we say in Pakistan that we are very proud that we make JF-17s. Right? Let's take that as an example. Each JF-17 actually has some motherboards, उनके अंदर एक electronic circuitry होती है, which is run by some chips. Those chips are actually made by some countries around the world, United States, China, Korea. Let's say those countries decide not to sell us those chips. Actually, we cannot make a JF-17 then. So for us to say that we make a JF-17 is beholden to availability of those very now, if you could make those chips, fine, but it's not that easy to make those chips. Even China cannot make those chips. So even China will not be able to produce a JF-17 if US says that you cannot have those specific chips. This is a problem. If you do not have this capability, it will affect not just one industry, but many industries. Any high-end industry which uses chips, today we're on the phone call and you order the chips show up. That is not the world of the future. In the world of the future, your accessibility to the chips will depend which block you belong to, what your current relationship is with which country, and so on and so forth. It is going to become a very complicated world, and China and other countries are, bracing for it, and Pakistan should too. As far as investment is concerned, I believe that Pakistan को हर चीज में try करना चाहिए. Software के अंदर हम जितनी अपनी job try करना चाहिए. Agriculture के अंदर बहुत opportunities हैं. FinTech में बहुत opportunities हैं. MedTech में बहुत opportunities. पाकिस्तान में इस वक्त jobs की इतनी problem है. We should not leave any stone unturned. Any. Because that is the existential threat of Pakistan, is that our 22 million people don't have jobs. They are trained, they have went to a university, they have a degree, they think they need a job, they believe they deserve a job, and we have no job to give them. So I think वो 22 million उनको jobs देने का तरीका ये नहीं है कि हम एक चीज पकड़ लें. I think we'll have to pick 100 or 200 or 300 things. किसी में 1 लाख बंदा लगेगा, किसी में 2 लाख लगेगा, तब जाके वो 22 million लोगों को जॉब मिलेगी. तो मेरा ये ख्याल है we should try everything, and in case of semiconductors, not only it solves 100,000, 200,000 people job problem, but it also solves the problem of national sovereignty, or giving you some strength, give you a seat on the table so that we can potentially negotiate our way towards semiconductor security. Makes sense. इस point के ऊपर जो ये plan है, ये किस point पे खड़ा हुआ है? मतलब is it just a document with an idea? Or is there some form of implementation that we're beginning to see now happening and sort of coming out? What's the current update, and what do you see happening over the next 12 months? So, first of all, this is not a kind of plan which says, if government does something, then we will do something. There's nothing like that. This document was prepared not by me, by
21 very, very talented people of Pakistan, which work in various different organizations in Pakistan and diaspora around the world. And we thought about what can be done, what should be done. And most of this will be done by private folks. And this sets up a mechanism, a framework for them. For example, one element, if this plan says that we should form Pakistan Semiconductor Association. Why? So that we can market to the world what opportunities exist in Pakistan. We will do it. We're not waiting for anybody to do it. People like you, people like Ali Fahad, Park Launch, and other people who have access to a lot of people, you will be using that platform to advertise to the world. Pakistan is open for semiconductor business. People should come and start semiconductor companies. So that's one element. We can do it. There's an element कि वहाँ पे design center बनने. We will be setting up our own design centers. We are already starting our training program. We are already talking to multiple companies to come. We are not waiting for anybody. We are already in negotiation and setting up that plant in Lahore. So we are already in implementation. And the idea is the implementation. Actually, मुझे government official ने पूछा था कि what happens हम आपकी help ना करें तो कोई भी. मैंने कहा पहले तो सिर्फ जो हेल्प का ताल्लुक ये है कि हम ये प्लान तो करने ही जा रहे हैं. आप अगर हमारी हेल्प कर देंगे तो ये 3 साल में हो जाएगा. अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो 5 साल में हो जाएगा. So this plan is not something that is waiting for some handout or something like that. This plan is in implementation already. It's a framework for many people to come together and do something, and it allows people to work together so that we are not duplicating the effort and sharing each other, and जो common points है एक दूसरे की help करें rather than compete with each other, and to create a platform so that we can be done faster. That's it. Right. A major component of this plan is obviously involves basically talent and essentially upskilling talent, realigning the bachelor's and master's and PhD programs to ensure that जो talent requirements है वो पूरी हो. इसके ऊपर ऑडियंस से भी एक सवाल आया था और इसमें मैं थोड़ा सा नुआंस और भी ऐड कर दूंगा. अगर हम आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देख लेते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ऑलरेडी उसका किक स्टार्ट हो चुका है, काफी अर्से पहले से हो गया हुआ था. A lot of universities are already working on it. Not just universities, vocational training institutes जो छोटे courses भी करवाते हैं. But पाकिस्तान की एक स्टडी ये कहती है कि 85% to almost 90% of all students who are coming out of universities are right now unemployable, and that is even when there is a huge demand for talent right now in Pakistan. जो ये प्रॉब्लम है HEC की और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की और जो sort of red tape and bureaucracy है across the board education system, and not just for exclusive to or pertaining to, let's say, semiconductor or engineering space. How do you plan on maneuvering through that? Because वही वाली बात है कि जहाँ निज़ाम ही ऐसा है कि जिसमें again IT के साथ हमारे सामने है क्या सूरत हाल हुई. So it's just one other industry that is being added, and उसमें भी potentially ये हो सकता है कि 1 लाख बच्चे की बात तो हो रही है, 1 लाख बच्चा इंडक्ट हो रहा है, बस उसमें शायद 10,000 जो है वो actually useful हो और बाकी 90,000 is not ready to actually work anywhere, and it's essentially useless. And so how would you go about that? So हमने इसको ये सोचा कि changing the university curriculum is a long process, not just in Pakistan, everywhere else in the world. And उसकी वजह universities cannot just go after the next fad, and they should. They don't do that in US, they don't do that in UK, they don't do that in China, they shouldn't do that in Pakistan either. They should study a field, take some time, 1, 2, 3 years, कि अच्छा ये पक्की चीज है, ये कोई कच्ची चीज नहीं है, उसके ऊपर फिर करिकुलम बनाए, उसको भी टाइम लगता है. तो नॉर्मली यूएस में भी किसी एक ट्रेंड को कैचअप कर, ये नहीं होता कि कल एआई आया और अगले दिन 500 यूनिवर्सिटी ने एआई की क्लासेस स्टार्ट कर दी, ऐसे कभी भी नहीं होता. यूनिवर्सिटी सिस्टम टेक्स टाइम एंड इट शुड, because university education is supposed to be sort of a permanent education. What we are missing is an in-between thing. We have proposed that. In the national plan, we have formed a new set of institutes called Advanced Training Institutes. The purpose of the Advanced Training Institute is to take a job description, train the people against the job description, but also find the holes, as you were pointing out. उनके holes क्या हैं यूनिवर्सिटी जो fill नहीं कर पा रही,
Secondly, हमारा plan ये भी कहता है, let's work with the universities, inform them of those holes. Whatever holes can be filled up in existing curriculum, do that first. ठीक है ना? अगर लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो चीज उस तरह नहीं पढ़ाई जा रही जिस तरह हमें चाहिए, that can be done without talking to HEC. It is just a matter of working with the professors and just informing them, okay, these are the critical components you are not teaching or not teaching the right way, please teach them. And then those universities are missing through PEC cycle, that will take time. We should not wait for those cycles. We should depend on these advanced training institutes. We should form them all over Pakistan. We should have these institutes talks to the people who are actually developing the jobs and develop the skill. That we believe is a short-term solution. Long-term, 5 years from now, these ATIs should disappear, because by that time, universities have picked up the needs of the industry and they are training people according to that. And we believe that's how we should do in semiconductor. I think we should do the same thing in software, but I don't like to be the chief prosecutor of HEC and PEC. And the reason for that is I have been part of that system for over 10 years. I was a professor, and I created the curriculum in Michigan when we were doing computer science curriculum. It took us 2 years to do that. And it took another 2 years to put it into the system, to get it going all the universities in Michigan I'm talking about late 80s, early 90s. And I saw that how it took Michigan 4 years to do it. And it makes sense to do that. So I think the right solution is fast changing ATIs, advanced training institutes, which can change on a whim. Based on the job description, they adjust, they train, and they keep on changing every 6 months based on wherever the job description is coming, and keep on tailoring the needs to the students and making them skillful for the job that they are going to do. Right. जाहिर इसमें एक और कंपोनेंट आपने कहा, आपने स्टार्ट से मल्टीपल टाइम्स मेंशन किया कि बाहर की ऐसी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर है जिसको आप पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, डिजाइन सेंटर्स खोलना चाहते हैं, वो कंपनीज एसेंशियली जो कि फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो कि एसेंशियली टैलेंट को हायर करेंगी और हायर करके वो डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी टू ऑब्वियसली द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसमें जाहिर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कंपोनेंट है पाकिस्तान में, जैसे कि एजुकेशन की आपने बात की, उसी तरीके से बिजनेस सेटअप करने में भी देयर आर अ लॉट ऑफ हर्डल्स एंड अ लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं. तो इस प्लान में हैव यू provided some sort of a provision ke, I don't know, maybe through the STZA or some other government, तो आजकल तो चल भी काफी सारे रहे हैं जिसके थ्रू potentially in businesses को पाकिस्तान में facilitation ज़्यादा बेहतर मिल जाए when they're planning to set up. So actually under the guidance of the President of Pakistan, there is a monthly meeting that is created just to do that. And it is actually called IT Facilitation Committee. That's the title of that meeting. It happens once a month. And उसके अंदर हम ये करते हैं कि जितने भी जो दुनिया भर से कोई लोग पाकिस्तान में businesses IT related and semiconductor sort of is a IT related business करना चाह रहा है, चाहे वो customs problem हो, चाहे वो trademark copyrights की हो या patent infringement की हो, illegal system को, we bring all those things to that monthly meeting. That has been going on, I think, close to a year. तो उसके अंदर हमारे एम्बेसडर हैं मजीद साहब, वो अमेरिका से वो अटेंड करते हैं. प्रेसिडेंट साहब उस मीटिंग को चेयर करते हैं. उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं टिपिकली आमिर हाशमी साहब STCA के होते हैं, खालिद मंसूर साहब हमारे CPAC के होते हैं वहाँ पे. देयर इज ऑलवेज बकर साहब आते हैं स्टेट बैंक से. All these representatives are there. Once a month we get together and we say this is a problem, and subsequently in the last few meetings one by one we are trying to solve the problems. And why does it take this problem? और बहुत लोग exact problem लेके आते हैं with examples कि ये problem हुई फलाने को पाकिस्तान में register करने में. So I think from where it was 6 months ago, it is already much better. Everything is going towards to a single page portal कि लोग जब जाएं एक कंपनी के लिए तो सारी इंफॉर्मेशन वो एक जगह दें, सारी डॉक्यूमेंट्स एक जगह दें. हमें पाकिस्तान में तकरीबन 13 approvals चाहिए होते हैं कंपनियां स्टार्ट करने के लिए approximately, and there is some good reason for that, but there is no need for fill 13 forms. You fill one grand form, one information, it automatically fills other 13 forms,
and it gets approvals, and you get approval, the grant approval at all. So this is what's going on. I believe it has made a lot of progress. Every month we listen to the complaints of various different people, and the goal is not to fulfill the complaint of that person, to fix the system so that next person does not have to face that. I believe we have made a lot of progress, and we continue to make progress. Once a month, there is a meeting now where we are addressing it and trying to make it easier for people to start business in Pakistan. Right. आपने ये जो advanced training institutes की बात की थी, we have a question from the audience as well on it कि जाहिर है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि essentially exist नहीं करती पाकिस्तान में, उसका talent exist नहीं करता, तो जब हम talent build करना शुरू करेंगे तो initially जो trainers हैं जो कि उस talent को train करेंगे, early talent को समझने train करेंगे, वो फिर हम कहाँ से लेकर आएंगे अगर वो पाकिस्तान में exist नहीं करता? एक्चुअली पाकिस्तान में प्रोफेसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो ये पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल बहुत सारे चिप टिप आउट होते हैं, नस्क में होते हैं, लम्स में होते हैं। ना सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटी में, हमारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं। हमारे पास एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है बहुत, उसका नाम है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कराची में है। उन्होंने 5-6 चिप टिप आउट किए हैं। वहाँ पे प्रोफेसर अली अहमद है, उनके पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स चिप टेप आउट कर रहे हैं। So ये बात नहीं है कि राइट। सो बात हो रही थी उसकी टैलेंट की, एंड यू एक्सप्लेन के ऑब्वियसली वो टैलेंट ऑलरेडी उसका ऑन सम लेवल एग्जिस्ट करता है। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी अ लिटिल डम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखें एक तो आपकी जो चिप्स हैं वो एडवांस चिप्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग एज, अगेन फॉर एन एवरेज कंज्यूमर Apple की M1 chip is for me is a potential example of a great chip, right? But then उसी में हमारे पास पुरानी चिप्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो आपके बेसिक मोबाइल फोन्स में लगती हैं, जो आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है तो वो इट्स एज विद एनी अदर बिजनेस, पुरानी टेक्नोलॉजी भी यूज तो हो रही है। सो डू यू थिंक, चले मैं एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करता, फिर मैं कहता हूँ कि हमने अभी रिसेंटली सेल फोन्स की एक पूरा पाकिस्तान में एक मुहिम शुरू हुई कि जी मेड इन पाकिस्तान सेल, और एटलीस्ट असेंबल्ड इन पाकिस्तान सेल फोन्स बनने चाहिए, जिसके ऊपर क्रिटिक बहुत ज्यादा ये आती है कि जी चीजें सारी की सारी चाइनीज कंपोनेंट्स हैं या दुनिया के और इलाकों से कंपोनेंट्स आए हैं, यहाँ पे सिर्फ उसको इकट्ठा करके लगा दिया तो एसेंशियली आपने कोई कमाल नहीं किया। How soon do you think we can actually see components being produced in Pakistan? I'm not talking about, let's say, the Samsung S22 or the iPhone, new latest iPhone component, but maybe entry phones या mid-range phones जो कि comparatively 5-6 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चिप टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो सकती है? देखिए, हम पाकिस्तान में कुछ भी चिप प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कैपेक्स चाहिए होता है, बहुत सारी मशीन चाहिए होती हैं, इकोसिस्टम चाहिए होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक बहुत सारी कंट्रीज में नहीं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज लिटरली इन ओनली 5 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं डिजाइन की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक खास किस्म का चिप होता है या एक आर्किटेक्चर होता है, हम RISC-V कहते हैं। वो काफी एक एडवांस, एक नई चीज है। हमने कहा कि हम पाकिस्तान में उसको वेरीफाई करेंगे। वो चिप वेरिफिकेशन वो प्रोसेस होता है कि जब आपने एक डिजाइन कर लिया, अब ये चेक करना है कि क्या ये जो डिजाइन आपने किया है, ये आपने जो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक को डिजाइन किया है, ये ठीक किया है कि नहीं किया। इस सिंपल से प्रोसेस को वेरिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि चिप कॉम्प्लिकेटेड होता है तो प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ डिजाइन टूल्स भी होते हैं, प्रोसेस यूज होता है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 200 बच्चों को लिया, उनको ट्रेन किया। हमने कहा कि भाई ये लेटेस्ट RISC-V प्रोसेसर को आपने वेरीफाई करना है पाकिस्तान। उस वक्त हमको अमेरिका में मुश्किल हो रही थी उस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इसलिए कोई इतनी नई चीज थी। मैं आपको बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि विद इन 9 मंथ्स पाकिस्तान के बच्चों में लाहौर में बैठ के दुनिया के लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो RISC-V बेस्ड थे उनको ना सिर्फ वेरीफाई किया, बल्कि उसको फिर हमारी बहुत सारी कंपनियों ने वो बेचा और वो वहां से हुआ। तो 9 महीने में हमने उन बच्चों को ट्रेन किया, उसके बाद उन्होंने उसको सीखा, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई किया। तो ये पॉसिबल है। वो कोई आसमान से नहीं बच्चे उतरे, वो हमारे नस्ट के बच्चे थे, लम्स के बच्चे थे।
माशाल्लाह से यूईटी के बच्चे थे, यूईटी टेक्सला के बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ये सारे वो लाहौर के एरिया की यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ साहब की, ठीक है ना। कराची के अंदर एनईडी के बच्चे हैं, सर सैयद के बच्चे हैं, उस्मान इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी के बच्चे, उन्होंने चिप्स टेप आउट किए हैं। तो ये चिप्स डिजाइन हो रहे हैं पाकिस्तान में, वेरीफाई हो रहे हैं पाकिस्तान में, स्केल छोटी है। तो मैं ये आपके ऑडियंस को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि हम कोई अनहोनी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 300 लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये 20,000 लोग या 40,000 लोग काम करें। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, it is matter of scaling up things what we are already doing in Pakistan at a small scale. Right. और इसमें जो फॉर एग्जांपल आपने कहा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मल्टीपल टाइम्स बात हुई, and we have a couple of questions from the audience as well कि if people want to invest in on training or on setting up these sort of small startups कह लें इनको, या small scale businesses कह लें, so what's the process for them? So is there like a one window of like a one shop stop where they can sort of, the private sector can sort of fit as well and say, okay, listen, I'm interested, I'm part of this industry and I'm interested in investing. So what do I do? So I think उसके लिए हमने, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहते, राइट, आई मीन वी शुड नॉट, आवर आंसर टू एवरी प्रॉब्लम शुड नॉट बी गवर्नमेंट कुछ करेगी। तो जो पीएनएसपी में जो एक बहुत बड़ा प्रपोजल है व्हिच इज अंडरवे एज वी स्पीक, इज टू सेट अप पाकिस्तान सेमीकंडक्टर एसोसिएशन. Pakistan Semiconductor Association is going to be an association which will actually have a website process कि आपको ट्रेन बंदे चाहिए, कैसे मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सी आपको ऑथराइजेशन चाहिए होती है, वो कैसे मिलती हैं, वो सब कुछ. तो दिस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एक्चुअली विल बी अ नॉन प्रॉफिट. इट विल ऑपरेट इन पाकिस्तान, इट विल ऑपरेट इन यूएस, इट विल ऑपरेट इन चाइना. एंड अगर कोई अमेरिका से, चाइना से या पाकिस्तान से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ये वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट के साथ बात करेगा कि भाई आप मेरी हेल्प करें. जैसा पाक लॉन्च इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, इस तरह ओपन है, इसी तरह और हैं. पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका में भी हैं, चाइना में भी हैं. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट विच विल वर्क विद ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें, बट इट विल बी प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड so that we can move at the speed of what our audience needs, right? जहां तक ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट का, मैं समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान में जो अच्छा सिंपल काम है वो ये है कि जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है, आइदर जो चाइना में है या यूएस में है, और जिनकी रिलेशनशिप्स हैं बड़ी कंपनियों के साथ, हमें इनके साथ बात करनी चाहिए. एएमडी के साथ, इंटेल के साथ, मार्वेल के साथ, एनवीडिया के साथ, गूगल के साथ, सबके साथ अगर आपके रिलेशन, अब उन्हें कहेंगे जी मेरे पास ये सिचुएशन है कि मैं पाकिस्तान में 100 बंदे आपको ट्रेन करके एक आपका डिजाइन सेंटर खोल के दे सकता हूँ, जो कि जिसकी एनुअल कॉस्ट जो है वो $1 मिलियन से भी कम होगी. अगर आप जाके किसी भी अमेरिकन कंपनी को ये बोलेंगे कि मैं 100 लोगों का ऐसा डिजाइन सेंटर बना सकता हूँ जो कि 1, 1.5, 2 मिलियन में भी चलेगा, they will jump up and down, because similar thing in Bay Area you can think about that would cost you maybe 5x of that, ठीक है ना. लेकिन वो कहेंगे ये ट्रेन बंदे कहाँ से आएंगे, फिर हमें उनको साबित करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हैं 200-300, ये एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आपसे जॉब स्पेसिफिकेशन लूंगा और उनको ट्रेन करूंगा. फिर वो कहेंगे, हम वहाँ कहेंगे तो हम पे टैक्स कितना लगेगा, हम कहेंगे STZA ने हमारे साथ काम किया है, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स हैं, आपकी कंपनी वहाँ होगी, ये बिल्डिंग्स हैं हमारे पास. सो आई थिंक दिस इज द प्रोसेस दैट गोइंग टू हैपन. इनिशियली मेरा ये ख्याल है कि इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ स्टार्टअप कि आप पाकिस्तान में आप एक स्टार्टअप कंपनी खोल लें. इनिशियल जो अपॉर्चुनिटी है वो हम अमेरिका में जाके कंपनियों को कन्विंस करें कि वो अपने डिजाइन सेंटर खोलें पाकिस्तान में. दैट इज स्टेप 1. लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे पाकिस्तान में जो कि सेमीकंडक्टर कंपनियां खोलेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो वो लोग भी उसी को सेंटर से हेल्प हो जाएंगे. डिजाइन कंपनीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. हमारा एक प्रपोजल है इसके अंदर कि जो डिजाइन टूल्स हैं वो पाकिस्तान में फ्री प्रोवाइड किए जाए. डिजाइन टूल इज द सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस दैट यू हैव इन दिस बिजनेस. चाइना ने जब ये शुरू किया था तो उन्होंने भी ये किया था कि उन्होंने कंपनियों के पास जाके डिजाइन टूल लिए और पूरे अपने नेशन में कह दिए कि अगर आपने चाइना में डिजाइन कंपनी खोलनी है तो टूल्स फ्री हैं. इंडिया ने भी ये किया था, हमने भी इस प्रपोजल में डाला. ये एक काम है जो कि हमने हुकूमत से कहा है वो करें,
इसलिए कि And हम when नहीं we कर talk सकते। about design tools, are these software tools or are these Software. do they include hardware components as well? No, these are software tools. These are Okay. on servers and laptops. You open up the tool and you take your chip and you do some process of your chip, some designing of your chip. It's completely software. You sit on a terminal and you do this. Tools expensive Right. होते हैं। ये प्राइवेट एंटिटी इसलिए नहीं कर सकती कि हम लोग किसी हर प्राइवेट को देंगे कैसे। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो एक जाएं, वो इन कंपनियों से टूल लेके और वे कह दें कि भाई पाकिस्तान में जब भी आप कोई बंदे हायर करेंगे, these tools will be free for you. There is precedence of that. Right. China did it, India did it. We are asking Pakistan government to do the same. Right. And just to understand, for design validation, all of these things, there is no hardware. So, for example, अगर मैं कहता हूँ कि यार कोई particular design हुई है chip और उसको आपने identify करना है कि ये design है, ये किस तरह से perform कर रहा है, तो is there no chip is, I mean, even if we're not producing it, let's say China is producing it, we design it and we ask China to sort of make that design and send it to us. Will that be part of the process or is it purely software? There is no physical It's purely chip software. requirement. बट देखिए ना, आपने एक गाड़ी डिजाइन की, जब आप गाड़ी डिजाइन करते हैं उसकी रियल लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता ना। इट इज अ डिजाइन इन अ कैड कैम सिस्टम इनसाइड अ कंप्यूटर। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई नवीद भाई आपने ये कहा था ये गाड़ी जो है वो 100 मील पे चलेगी नहीं चलेगी, तो उसके लिए सिमुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन। आपने कुछ गाड़ी अभी डिजाइन नहीं की, अब उस गाड़ी को सिमुलेटर में लाके चला के देख सकते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसके अंदर ऑयल कंजम्पशन ये होगी, आप उसको सिमुलेट करके देखेंगे कि क्या वाकई ऑयल कंजम्पशन ऐसी होती है कि नहीं, उस पर एयर रेजिस्टेंस कैसे होती है, उसके टायर जो उनमें वो ग्रिप है या नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है विदाउट एक्चुअली फिजिकली डिजाइनिंग अ कार। दिस इज वेरिफिकेशन कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ कार को देखा जाता है। और अभी सारी गाड़ियों में यही होता है, गाड़ी को ऐसे थोड़ी होता है आप पहले गाड़ी बना के फैक्ट्री पहुंच जाते हैं कि बना दो, पहले पूरा डिजाइन कंप्लीट होता है, पूरा वेरीफाई होता है, सब कुछ बनने के बाद उसके बाद फैक्ट्री में जाया जाता है और फिर उसको गाड़ी को बनाया जाता है। चिप में भी यही किया जाता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस हैपेंस बिफोर इट गोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। Right. There's a question here that's asking, can we develop such design tools by ourselves in Pakistan also? Yeah, are these like legacy softwares जो कि बाहर वाले ही मिलेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, बाहर वाले भी कोई आसमान से तो नहीं उतरे हुए, उन्होंने भी ये बनाए थे, लेकिन वो 20 साल से बना रहे हैं, 30 साल से बना रहे हैं, तो यहाँ पहुंचे। लेकिन अच्छी खबर इसमें ये है कि इन टूल्स में इनोवेशन हो रही है, और जब आपको थोड़ा सा काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आइडिया आता है कि इसको ऐसे क्यों नहीं करते, एक शॉर्टकट आ जाता है, तो वो फिर एक एडिशन बन जाता है, एड ऑन टूल्स बन जाते हैं। तो जो टीम्स इनमें ये एक्सपीरियंस होता है वो एड ऑन टूल्स बनाने शुरू कर देते हैं। चाइना में भी ऐसा हो, इंडिया में भी वैसा हो रहा है कि वो कंपनियां बनना शुरू हो जाती हैं, नॉट द मेन टूल बट सम एडिशन टू द टूल्स। तो वो फिर कंपनियां खरीदी जाती हैं, बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं उनको आमतौर पे। तो बड़ी कंपनियों में इनोवेशन जरा डिफिकल्ट होता है। केडेंस है, सिनॉप्सिस है, वेंट्रोग्राफिक्स है, ये 3 बड़ी कंपनियां जो टूल्स बनाती हैं। तो वो उन्होंने पिछले 20 साल में यही किया है कि एक छोटी कंपनी कहीं स्टार्ट हो गई, इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई, फ्रांस में, चाइना में, इधर, तो उन्होंने एक एडिशन बनाया, एक न्यू फ्यूचर बनाया, टूल नहीं बनाया। तो फिर वो केडेंस को उनको $50-60 मिलियन में, $100 मिलियन में खरीद लेती है कि चलो भाई बजाय खुद डेवलप करने के। तो ये पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले हमारे पास लोगों को एक्सपीरियंस हो कि जो केडेंस में टूल यूज कर रहा हूँ उसमें क्या चीजें ठीक नहीं है, क्या चीजें ऑप्टिमाइज हो सकती हैं, कौन सा फीचर मिसिंग है, कौन सा फीचर लाने से ये टूल बेहतर हो सकता है। देन दोज एड ऑन टूल्स कैन बी बिल्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर टैलेंट माशाल्लाह बहुत है। आई डोंट बिलीव देयर इज एनी फंडामेंट। जब उनको उस सॉफ्टवेयर टैलेंट को ये सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी, आई थिंक द टू कैन बी कंबाइंड टू एक्चुअली क्रिएट न्यू एड ऑन टूल्स which can add to the overall design tools. Right. मैं थोड़ा सा conversation को जरा zoom out करूंगा and we're going to go back towards the national semiconductor plan. जाहिर है कि उसमें गवर्नमेंट कंपोनेंट भी है, you're working actively with the government and automatically जैसे कि आपने कहा कि वो वैसे 5-8 साल 9 साल लगा के प्राइवेट सेक्टर से शायद कर ले, बट गवर्नमेंट बाय इन जनरली इंपॉर्टेंट होता है। हमने जब लास्ट टाइम आईटी इंडस्ट्री का भी देखा था कि अर्ली 2000s के अंदर बिकॉज गवर्नमेंट उस तरह से सीरियस नहीं थी, तो हम वो जो जिस तरीके से दूसरी रीजनल कंट्रीज जो हैं वो यूटिलाइज कर सकें, वो हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं कर सके, इवन विद ऑल द प्राइवेट सेक्टर पुश। तो how do you see, I mean, right now you have this current government and they seem to be understanding the importance of this, and they seem to be there is a positive attitude from them towards this.
how do you ensure the continuity of this policy? Because वही वाली बात है कि जब political class की बात है वो तो 5 साल बाद constantly change हो रही है. You know, and generally हम पाकिस्तान में देखते हैं जब जो long term projects हुए हैं वो ज़्यादा defense या other institutes take them. Political class generally they want quicker, faster, result oriented projects, and so they're like यार ये हम अगर इसमें कर रहे हैं so can we get some sort of an input or some sort of a result within the next 2 to 3 years? And ये जो आपका plan है, this is going to show us dividends maybe 5 years, maybe 7 years, and real dividend maybe 10 years from now. तो उसको आप किस तरह ensure करेंगे, you know, policy continuation across political transformation? So पहले कहना कि पाकिस्तान के अंदर जो political system है, it needs a short-term return. It's not true for just Pakistan. It's true in US. It's true in India, it's true everywhere. It's a necessary evil attached to democratic cycle, right? So democratic cycle अगर 4 साल का है तो फिर वो आपको उसका credit भी 4 साल में ही चाहिए, right? So that being the case, it's true in Pakistan, true everywhere else. तो हमने ये किया है कि हमने अपने process को break down कर दिया है into smaller bite sizes. तो इस गवर्नमेंट को हमने वही bite size दिखाया कि भाई ये करें, उनको अच्छा लगा कि this is something they can do. हम ये नहीं करें कि आप ये करेंगे तो इसका नतीजा जो है 7 साल में निकलेगा. हम ये करेंगे कि आप ये करेंगे तो then we will employ 1,000 people, 5,000 people, 10,000 people today. If you can do it, it takes 3, 6, 9 months, get it done. Let's do this bite size. So plan is going to be in bite sizes. Every government that will come will bite onto their piece. And by the way, we should do that. हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की नीड है to do something in 5 years or 4 years, because that's a political cycle they're in. That is the reality they live. They live this reality in Pakistan. They live the same reality in UK and same reality in US. हम US में भी यही करते हैं. हम हर प्लान को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको बाइट साइज में कर देते हैं कि ये करंट गवर्नमेंट क्या करे ताकि उनके पॉलिटिकल उसमें फिट हो सके. तो मैं इसीलिए जिस तरह मैं आपसे पहले कह रहा था ना, मैं HEC और PEC को क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे नहीं खड़ा होता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाई दे. मैं इसीलिए मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि पॉलिटिकल साइकिल जो 4 साल का है, 5 साल का है, उसकी रियलिटी को हमको फेस करके उसके साथ काम करना चाहिए उसको. Because then if you are working with them, we are understanding their problem. Current government or any other government has a need to show results, to get elected again. Why would people elect them again if they are not showing results? If we are saying, sorry, मेरे result तो 10 साल में ही आते हैं, मैं तो इस तरह काम करूंगा, then they will go to some other people who will show some results in the next 2 years, because that is the cycle and the reality they face. So हमने PNSP में भी यही किया है कि हमने इसको bite size में कर दिया है. We are talking to the current government about the things they can do today that will benefit, which is beneficial for them, beneficial for the country. And together we all, I think that is the reality and we should work with that. Right, makes sense. We're at the 54-minute mark and we're going to be ending in the next 6 minutes. So this is going to be my last question to you. And I just want you to sort of summarize, or rather, अगर मुझे holistic बता सकें कि where does PNSP stand right now, and what would your message be to all the people listening, जो कि maybe directly or indirectly connected हो with this industry in Pakistan? So I think, first of all, I would like to thank all the audience who joined. I know हर आदमी का 1 घंटा बहुत important होता है, तो सबका बहुत शुक्रिया to join us. Number one, I think hopefully people have understood in this call that semiconductor is not just an economic opportunity for Pakistan, because semiconductor industry very soon, in about 2 years, is going to be a $1 trillion industry around the world. Pakistan cannot afford not to participate in it, right? Pakistan is the 6th largest country in the world. How can you not participate in a $1 trillion industry? Number one. Number two, I hope people have understood that it is the issue of sovereignty of Pakistan. If Pakistan wants to remain a sovereign nation, we have to be able to do enough so that we can sit on the table or align with people who are doing enough. Number two. Number three, it should be clear to people in Pakistan that we can start now. We already have talent in Pakistan. We have great universities which are training good people. They have some gaps. We can cover the gaps. We have already done a pilot program. We have already proven it is doable. Pakistan में state of the work already काम हो रहा है. छोटे scale पे हो रहा है, बड़े scale पे नहीं हो रहा. Last message. We don't have to wait for any government. We don't have to wait for any miracle. We can do it ourselves. Government is already helping. We are very thankful for the government. Believe me, we are very thankful. They are doing what they can. Government by definition has many things to do.
but they are helping. But this is something we don't have to wait. We are pursuing on our own anyway. But between the government and the private sector together, I think if we work hard in the next 3-4 years, I believe we can bring 100,000 Pakistanis into semiconductor, which can bring anywhere between $3 to $4 billion into our economy every year. So that is the overwhelming message. And this is, if you are listening from US and you are working in a large company and your company has design centers in India and elsewhere, the question is, can we start? They can meet me, meet any other people from the PNSP team. We will help to convince your company to start a design center in Pakistan. If you're thinking of starting up a company in US, a startup in semiconductor, consider setting up a design center in Pakistan. पाकिस्तान में कंपनियां हैं, ड्रीम बिग एक कंपनी है जिसने अपने डिजाइन सेंटर पाकिस्तान में खोले हैं. पाकिस्तान में एक सर्विस कंपनी है 10X जिसको बिलाल जफर साहब चलाते हैं, उन्होंने इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं. मेरी एक कंपनी है RapidSilicon. We have hired 60 people. We are willing to hire another 200 people in Pakistan. We are training them right now, inshallah. There are other companies we are bringing to Pakistan. So it is already happening. If you know people who are in semiconductor business, you want to participate, reach out to somebody in the PNSP team, reach out to me. We'll be more than happy to do whatever we can, push this movement forward. Dr. Naveed, thank you so much for sharing all the insight and joining this session. This is very, very insightful, and I'm very excited to hear the future that you've painted. And I'm sure, when there are people like you involved, it's going to be a phenomenal coming few years, particularly for the semiconductor industry. Thank you so much for sharing all the insight. Thank you very much, Muzammil. You are the future of Pakistan. You, as in young people of Pakistan, we look towards you, all of you, to take this nation forward. आप लोगों ने करना है, हम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है. आप लोगों ने करना है, और मुझे खुशी होती है पाकिस्तान में. I see a lot of hope in Pakistan youth. हम लोगों की जनरेशन जो होती थी ना, वो गवर्नमेंट की तरफ देखती थी, इधर उधर देखा करती थी. आप लोग नहीं देखते. आप लोग बिलीव करते हैं कि you have whatever it takes, and I believe this is where Pakistan hope lies, and this is where my hope lies. Inshallah, together we can make this all happen. Thank you so 100%, much. 100%, inshallah. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for joining this session. On behalf of Park Launch, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. We'll see you in the next session. Thank you so much.